So last lecture we studied cyclic photophosphorylation. So just see how you can understand today with the non-cyclic photophosphorylation. Why cyclic photophosphorylation is called as cyclic photophosphorylation? Energy from the sun, energy from sun, okay, is taken by the photosystem 1. It is taken by photosystem 1, PS1, that is P700, photosystem 1. This light energy is taken by PS1, converts light energy into chemical energy in the form of electron. Then it goes to Z ferredoxin reducing substance. Then goes to ferredoxin. This electron goes to ferredoxin, then cytochrome B6, then cytochrome F, and then plastocyanin, and then return back to PS1. The electron go back to PS1. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था वो घूम घूम के फाइनली वापस PS1 के पास आता है. As PS1 photosystem 1 gets its own electron back, उसको उसका खुद का इलेक्ट्रॉन बैक मिल जाता है. So it is called as cyclic photophosphorylation. अगर उसको उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो it is called as non-cyclic photophosphorylation. ये जो था it was a revision or just a short revision of what we did last lecture. Okay, so cyclic photophosphorylation में क्या होता है? The electron which is released by the PS1, it returns back to PS1. Now let's study further. Non-cyclic photophosphorylation I'm going to start with today. Non-cyclic photophosphorylation. It involves both photosystem 2 and photosystem 1. इसमें दोनों photosystem involve करते हैं. मैंने पहले lecture में बताया था what are photosystem. Okay, so it involves both photosystem 2 and photosystem 1. Photosystem 2 पहला यूज होता है PS2, also called as P680. Photosystem 2, PS2 or P680, it absorbs light energy from sun. किससे लेगा energy? From sun. Sun से energy लेगा. After absorbing light energy, क्या करेगा? It undergoes photo excitation. किसमें जाएगा? Photo excitation में. What is it called as? Photo excitation. So for PS2 absorb light energy of 680 nanometer wavelength, undergo photo excitation, convert light energy into chemical energy in the form of energy rich electron. Now अगर तुम देखोगे previous में there is only one electron था, यहाँ पे 4 electron. Why 4 electron? मैंने बताया था पहले lectures में, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा. वहां पे वेवलेंथ वाज 700 तो एनर्जी वाज 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे वेवलेंथ 680 है तो एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. ठीक है. सो व्हाट आई सेड, cyclic non-cyclic photophosphorylation involves both PS2 and PS1. PS2, that is photosystem 2, that is P680, pigment 680, absorb light energy of 680 nanometer wavelength. PS2 absorb light energy of 680 nanometer wavelength. It undergoes photo excitation. It undergoes photo excitation. Due to photo excitation, what happens? The light energy is converted into energy-rich electron, chemical energy. Okay? Light energy is converted to chemical energy in the form of energy-rich electron.
Now this electron passes through the chain of electron carriers and they are P. यहाँ पे Q जो है, Q का मीनिंग है, Q का मीनिंग है, Q का मीनिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q का मीनिंग, it is plastoquinone reducing substance. It is plastoquinone reducing substance. Okay, it is plastoquinone reducing substance. 1 second. Huh? So what is it? It is plastoquinone reducing substance. Q का मतलब होता है plastoquinone reducing substance. तो वहां से it will go to plastoquinone. किधर जाएगा? Plastoquinone. This electron goes from PS2 to plastoquinone reducing substance. उसके बाद where does the electron goes? It goes to plastoquinone. Plastoquinone से the electron will go to cytochrome B6. It will go to cytochrome B6. Then it will go to cytochrome F. Then it will go to plastocyanin. Now what are all these things? They are the electron carrier. Last time हमने पढ़ा था, हाँ, chain of electron carrier. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, वो एनर्जी किसके पास जाता है? प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास. वहां पे थोड़ा एनर्जी देने के बाद फिर जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, उसको थोड़ा एनर्जी देता है, फिर इसको एनर्जी देने के बाद इसका अगर एनर्जी फुलफिल हो गया, पेट भर गया एनर्जी से, फिर इसके पास आ जाता है, इसको एनर्जी देता है, इसका भी पेट भर जाता है तो इसको भी एनर्जी देता है प्लास्टोक्विनोन को. जब तक वो इसको एनर्जी देता है तब तक क्या हो जाता है? अब सबको एनर्जी देगा तो उसका एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा? फाइनली वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, उसका एनर्जी खत्म हो जाता है. जब एनर्जी खत्म हो जाता है तो वेयर डज इट गो? PS1 के पास. इट गोज टू PS1 और P700, फोटो सिस्टम 1 और P700. अब P700 क्या करेगा? इट विल टेक लाइट एनर्जी फ्रॉम सन. बराबर है? वो क्या करेगा? एनर्जी सन से लेगा. सन से लेने के बाद क्या करेगा? इसका एनर्जी बढ़ाएगा. जो एनर्जी खत्म हो गया था इलेक्ट्रॉन का, उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ाएगा. क्या करेगा? एनर्जी बढ़ाएगा. और फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन चेन है जिसको हमने पढ़ा था जेड. जेड मतलब मैंने बताया था, जेड का मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. इधर लिख रहा हूं मैं, अलग कलर मार्कर में, सो दैट यू विल नॉट मिक्स इट. जेड मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. ठीक है. अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी खत्म हो चुका था वो गया PS1 में, लाइट एनर्जी फिर से बढ़ा दिया एनर्जी, ये जाएगा अभी फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएगा, फिर वो जाएगा इलेक्ट्रॉन को देगा फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन से किधर जाएगा? NADP के पास. 2 NADP. कितना? 2. अच्छा, एक NADP 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. एक NADP कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2. तो 2 NADP कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 4. आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन 4. yes, so after taking electron it becomes NADP minus ion. ठीक है. चारों इलेक्ट्रॉन अभी इधर खत्म हो गया ना? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न इधर गया? नहीं गया. वही टाइम पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. व्हाट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? सिंपल वर्ड है. फोटो का मतलब होता है लाइट. फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. फोटो मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. लाइट ब्रेकडाउन किसका होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. लाइट ब्रेक डाउन द वाटर. वाटर को स्प्लिट करता है. लाइट क्या करता है? इट स्प्लिट्स द वाटर. तो वाटर जो मॉलिक्यूल है 4, इट विल स्प्लिट इनटू 4H+ एंड 4OH-.
4H प्लस NADP के साथ जाता है और वो बनाता है NADPH2। एक NADP 2 हाइड्रोजन लेता है तो 2 कितना लेगा, 4, चारों यूज हो गए। नाउ ये जो है इसमें माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और खाली बचता है 4OH। 4OH क्या करता है, देखो 4 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, वो बनाएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन यूज हो गया और एक ऑक्सीजन गैस बनाया। ये इलेक्ट्रॉन जो है इट विल गो टू PS2 टू कंटिन्यू द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बट PS2 को इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, कहां से मिला इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द वाटर ब्रेकडाउन ना, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया। सो इट इज कॉल्ड एज Photolysis. non-cyclic photophosphorylation. Now I will repeat the whole thing once again or maybe twice again. Okay? It is also one more thing I didn't tell you. During the transfer of electron from cytochrome B6 to cytochrome F, an ATP molecule is synthesized. ADP के साथ मिलके एक ATP बनाता है. So what I am telling you, non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation involves both photosystem 2 and photosystem 1. Non-cyclic photophosphorylation involves PS2 and PS1. PS2 absorbs light energy of 680 nanometer wavelength. It undergoes photoexcitation, convert light energy into chemical energy in the form of energy-rich electron. Now, electron is rich with energy. It will pass through the electron carrier chain. What are the electron carrier chain? They are plastoquinone reducing substance. Then it will go to plastoquinone. Then it will go to cytochrome B6, then cytochrome F, and then plastocyanin. At each step during the transfer of electron, at each step during the transfer of electron, the energy of the electron goes on decreasing or reducing. The energy of the electron goes on reducing. This de-energized electron returns to PS1 or P700. During the transfer of electron from cytochrome B6 to cytochrome F, one ATP molecule is formed. Okay. Now, अभी क्या लिखने का? The P700 re-energizes the energy of the electron. P700 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को री-एनर्जाइज करता है, बढ़ा देता है, जिसके वजह से the electron goes to ferredoxin reducing substance, then ferredoxin, and then to NADP. NADP का full form given in your text, I will tell you. It is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. It is given in your, it was there in your 10th also. So NADP के पास जाता है. NADP once taking electron, it get ionizes. It becomes anion. पढ़ा है तुमने cation, anion? नहीं पढ़ा है तो छोड़ लो. इतना समझो नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है. नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग NADP माइनस माइनस आयन. ऍट द सेम टाइम त्याच वेळी काय होतो, फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होतो. फोटो म्हणजे काय, लाईट. लायसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन. म्हणजे लाईट जो आहे सनलाईट तो वॉटरला ब्रेक करतो आणि 4 वॉटरला 4H प्लस आणि 4OH मध्ये ब्रेक करतो. 4H प्लस जातो NADP सोबत, मग काय होणार, NADPH2 बनवणार आणि मग काय होणार, ते 4OH मायनस आहे, एक मायनस म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन, म्हणजे 4 मायनस आहे तर किती इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन. 4ही इलेक्ट्रॉन जातो परत PS2 मध्ये. आता PS2 कडे स्वतःची इलेक्ट्रॉन वापर होत नाही, तो इकडेच संपतो. त्याला इलेक्ट्रॉन मिळतो फोटोलायसिस ऑफ वॉटर करून. त्यामुळे ह्याला बोलतात नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ठीक है. नाउ the 4OH will form 2 water molecule and 1 oxygen molecule. Any doubts with this, students? Let me know. Just listen one more thing, that it is also called as Z scheme. Z एक ऐसा, फिर ऐसा गया, देन ऐसा, इसको Z भी बोला जाता है. हाँ, कुछ बुक्स में Z scheme भी दिया है, बोर्ड में दे में asked you what is the Z scheme of photophosphorylation. It is the non-cyclic photophosphorylation. We are done with the light reaction. Now we are going to do the dark reaction. Dark reaction, I had taught you or talked about you only two things, C3 pathway and C4 pathway. Today I am introducing one more pathway, it is C2 pathway.
C2 pathway is also called as photorespiration. C3 pathway, and we discussed about C3 pathway. Many names, है ना? C3 pathway is also called as Calvin cycle. It is also called as what we say, Calvin-Benson cycle. Benson cycle. Also called as, I think, Blackman's reaction भी बोलते हैं इसको. Blackman's reaction. Now next is the C4 pathway. C4 pathway is also called as HSK pathway. HSK pathway तीन scientists के नाम पे आधार है. It is based on three scientists' name. It is Hatch, Slack, and Korchak. बाद में देखते हैं. Okay. Now you need to copy this part. I'll just send it to your group. Cranch anatomy or anatomy of C4 plants. It is also called as anatomy of C4 plant. The word cranch का मतलब होता है wreath like या necklace like. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि नेकलेस के जैसा है, एक लेयर उसके नीचे दूसरा लेयर. ओके, तो इसके लिए इसको क्रेंच बोला गया है. किसी भी प्लांट के, यूजुअली C4 प्लांट के पत्ते को अगर तुम देखोगे, लीफ को, ठीक है, तो ये ऐसा मैंने बनाया है. इट मे बी लॉन्ग लीव्स होते हैं, जैसे जवार का रहता है, ठीक है, ऐसा लॉन्ग लीव्स वगैरह रहता है ना. सो एनीवे, कोई भी प्लांट का यहाँ पे पत्ता जो दिया है, लीफ, उसको अगर कट करते हैं तो देयर आर टू लेयर. अपर शाइनी लेयर, शाइन करता है अपर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस. दिस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस. कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस. उसके नीचे का लेयर जो है, लोअर लेयर, इज कॉल्ड एज द लोअर एपिडर्मिस. बट द लोअर एपिडर्मिस इज नॉट कंटिन्यू. ठीक है, यहाँ पे देयर आर किडनी शेप गार्ड सेल्स होंगे. किडनी शेप गार्ड सेल्स है. ठीक है, तो दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. नाम क्या है? अच्छा, लोअर एपिडर्मिस. So anatomy of leaves shows that the upper epidermis is without stomata. These gaps are called as stomata. You studied stomata in your lower standard. Stomata. ठीक है, एयर जाने के लिए, to go carbon dioxide in and oxygen to come out. Okay, so it consists of upper epidermis and lower epidermis. The upper epidermis is without stomata. The lower epidermis is with stomata. Now between them there is a mesophyll cells. ऐसा बीच में क्या रहेगा? ऐसा mesophyll cells रहेगा. क्या है? Mesophyll cell. The name is mesophyll cell. Actually, in other plants, usually mesophyll cell is differentiated. आगे वो differentiate होता है into palisade layer, then hypodermis layer. इधर ऐसा कुछ नहीं है. Only spongy mesophyll cells are there. Now, बीच में किधर रहेगा? एक vascular bundle. क्या रहेगा? क्या बोलता है? Vascular bundle. Vascular bundle. Now, why it is called as vascular bundle? Because इसमें दो है, एक xylem और एक phloem, जो तुमने बार बार पढ़ा है. xylem and phloem है ना? ठीक है, xylem and phloem. Xylem is towards the upper epidermis. Upper epidermis के तरफ रहेगा xylem. हाँ, upper epidermis से त्याच्या जवळ असणार xylem. And phloem is towards the
lower epidermis. Phloem is towards the lower epidermis. Xylem and phloem are separated by a tissue called as cambium. काय बोलता तेरा? Cambium. Cambium is a meristematic tissue. Meristematic tissue जो continuously divide होते रहता है. Now it is surrounded by a special cell जिसका नाम है bundle sheath cell. क्या बोलता है? Bundle sheath cell. What is the name? Bundle sheath cells. The chloroplast present in the mesophyll cell. याच्यामध्ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें भी सेल्स है तो क्लोरोप्लास्ट होगा. It is इसके जो क्लोरोप्लास्ट है they are agranule. Last lecture I taught you या last to last lecture what is a chloroplast है ना. क्लोरोप्लास्ट ग्राना है, स्ट्रोमा है. ग्राना इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज अ साइट फॉर डार्क रिएक्शन, बताया था मैंने. सो क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनल, अग्रैनल मतलब विदाउट ग्राना. इसमें ग्राना नहीं है, सिर्फ स्ट्रोमा है. ठीक है. एंड क्लोरोप्लास्ट आर मेनी सॉरी few in number and larger in size. इसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसका नंबर बहुत कम रहेगा, लेस नंबर बट साइज इज लार्जर. इसका जो क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट? ग्रैनल, मतलब इसमें ग्राना है. ठीक है. ग्रैनल एंड मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज. ड्यू टू दीज टू कैरेक्टर्स, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है, द क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स इन देम, ये दो अलग अलग कैरेक्टर की वजह से इसको बोला गया है क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म. दो है ना, दो अलग टाइप के सेल्स है ना. तो इट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म. मतलब दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, दोन प्रकारचे क्लोरोप्लास्ट आहे. ओके, दोन प्रकारचे क्लोरोप्लास्ट. There are two types of chloroplast. I hope you understand. I'll repeat once again. The anatomy of C4 plant shows that the plant, when it is cut, it has got an upper epidermis, a lower epidermis. The lower epidermis contains stomata. Between the upper and lower epidermis, there is a mesophyll cells. At the center, there is a vascular bundle surrounded by bundle sheath cells. Okay. Inside the vascular bundle, there is a xylem towards the upper epidermis and phloem towards the lower epidermis. Xylem and phloem are separated by cambium. The bundle sheath cell contains chloroplast, which is agranule, few in number and larger in size. The mesophyll cells contains chloroplast, which is granule, मतलब with grana, more in number and smaller in size. Size छोटे होते हैं. Any question, students?